Assalamu alaikum, dear students. I hope everybody is safe and sound and everybody is able to listen to my voice. I have disabled your mic and video privileges for 5 to 10 minutes in the initial time so that I can tell you that how to be in a class which is on a virtual platform. First of all, please disseminate information among your peers that it is important to use your full name in order to join in, राइट डू नॉट यूज ए एंड एस एंड हमाद इस तरह से मत आए बेटा पूरे नेम के साथ ज्वाइन करें बेस्ट ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ईमेल से ज्वाइन करें मीनवाइल you can confirm in the chat box that I am audible to you. Could you please confirm in the chat box that I'm audible to you or not? All right, I can see two people trying to join in. There is somebody named AS. Please leave a message in your class group. This person will not be allowed to join in until unless they use their original name. ठीक है उनको उनके ओरिजिनल नेम के साथ आना है या फुल नेम के साथ आना है डोंट यूज haphazard names otherwise मैं आपकी attendance ले भी लूंगी तो I won't be sure who is it, right? I'll be locking your attendance after 5 to 5, not 5, 10 minutes, of course. All right, so most of you are saying in the chat box that you can listen to me. That's great. So, as you know, today we were supposed to talk about that chapter that you were supposed to bring in the soft, not soft, in the hard form. But because we are in an online class, so we can postpone that activity for on-campus class because it requires us to, get into details about particular difficult concepts from that chapter. However, we do have to talk about another important point that is summarization and paraphrasing, and yes, tenses as well. So today we are going to do two topics. One is summarization and paraphrasing, and the other one is tenses. First, we'll do the summarization thing because yesterday I did talk about summarization in some words, but today I'll tell you how to go about it and how to handle summarization. Right, so let's wait another 2 to 3 minutes and then we officially start the class so that you know that the class has started. Meanwhile, if somebody is struggling with joining in, tell them to keep trying. They can definitely join in. The internet is working, right? Okay. Okay, so let's talk about summarization and paraphrasing. There are certain common myths that are widely misinterpreted by multiple levels of people that they think that summarization and paraphrasing both are the same things, but they are not. There are differences, and we are going to talk about those differences today. So, any idea what is the difference between the two, paraphrasing and summarization? No idea?
Share, it will display if you move around, if you're using internet from your SIM. This can be the reason that you can't see the text of the material. I can attach that material here as well. What you can do is you can download it and then, open it, or I can share it with your CR. It's okay, just listen, just tell me what's the difference between summarization and paraphrasing. Any idea? Nobody knows? Uh, yes, Aisha. Go ahead. Ma'am, summarizing is basically to write a whole paragraph in your own words, in your own summarized words. And in contrast to that, paraphrasing is like if there's a paragraph, then you have to like when you comprehensively explain. Summarizing is like अगर आप 100 words का paragraph है तो you can write it in 40 to 60 words, and according to the recent research it's given कि आप 50 words का लिखें, like if there's a 100 words paragraph that you have told yesterday. All right, good. So basically, the difference is okay. So Leman says summarization is the summary of a specified content. Of course, it is. Summarization requires us to actually read the entire thing and then come up with the 50% of the original text, and we should not and we must not miss the important points in it. Now, the common myths related to these two concepts are that the students they believe that these two things are similar and they are the same thing, but they are not. Now, what happens when we think that they are similar? Our production and our writing mechanics, they are very bad and we are not good at writing. So, the intent of this particular presentation is to talk about how to define what each process entails and provide a manner in which we can determine how to go about it. As far as the difference is concerned, paraphrasing is a restatement and summarization is condensing. Restatement is you simply take the text, you restate it in different words, different grammatical structure, and you do not change the thought and the meaning that is being depicted or portrayed by the author. That's paraphrasing for you. Summarization, on the other hand, is the smaller package of the original text, which is condensing the original text into a smaller, compact version so the people can read about it. Okay, how many of you are able to see the material on screen in your Meet? If it is visible, simply write yes, visible in the chat box. Okay, roll number 52 can see it. Ibrahim can see it. Mashal and Shiraz, Adil, Ali. All right. So it's just Shahryar who cannot see. Maybe the internet is um, not interneting at his end. That could be the reason, right? So, so paraphrasing is restatement, summarization is condensing. So simply put, paraphrase में आप words को अपने words में दोबारा से state करेंगे. अपने words का मतलब ये बिल्कुल नहीं है that you are going to add any criticism, any point of view, or any thought into it. You are just going to restate the obvious that is given in the text. Then moving forward, let's first talk about paraphrasing. There are certain definitions given over here. The American Heritage College Dictionary defines a paraphrase as a restatement of text or passage in another form of words. Etymology means where this comes from. Paraphrase derives from Latin paraphrasis and Greek paraphrazine, meaning to show and explain. So, this particular concept is not very recent. It has always been there in the history and it is still being talked and practiced among masses. Now, in order to define the concept of paraphrasing, the best words that we can utilize
would be to restate another's work in your own words, but maintaining the original meaning which author intended to say. So that is the basic definition of paraphrasing for you. Now, we have a certain checklist for paraphrasing, and the checklist is easier to remember. Number one, reread the original passage carefully in order to understand the author's meaning and the concept that is being discussed in the text. Identify the main points of the passage. If you remember, when we were reading that chapter, which was called Reading Basics, we did practice how to identify main ideas and supporting details. So it's important to identify the main points of the text so that we can go ahead with paraphrasing. Then we have to rewrite the passage in our own words, not just, using substitutes or synonyms, but we have to change the order of the text as well. Sometimes it so happens that students they simply change the words or their they find their synonyms and they think that this is paraphrase. That's a very basic wrong kind of paraphrasing that usually Pakistani students, including myself, used to do, but we have to come out of it. Number four, compare your text to the original and use a five-finger test. If you count more than five exact words, you need to change it. So this is your cue कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट है, उसको आपने पैराफ्रेज किया है, ओरिजिनल टेक्स्ट में से you will not use same exact five words in the same manner in your paraphrasing. That will be considered plagiarized and copied, and that will not be accepted at all. Then build in text citation and be sure to include page number. In text citation यानी referencing का एक style होता है जिसमें आप definitely refer करते हैं कि information कहाँ से और किस तरह से आई. But I have allowed everybody. If somebody is unable to join, it is their internet that's not working. ठीक है? Everybody is allowed. ठीक है? So these are the checklist points for paraphrasing that you should remember. Now, these are four musts for paraphrasing. First of all, it has to be in your own words. Number two, it has to be exactly the same amount or maybe more than that. It cannot decrease. ज़्यादा हो सकता है, सेम वर्डिंग हो सकती है, यानी 100 वर्ड्स हैं तो 100 वर्ड्स ही रहेंगे, लेकिन कम नहीं होने चाहिए. किसमें? पैराफ्रेजिंग में. Then a paraphrase must be used to explain a difficult, complex concept or passage, and it should convey the original meaning. You cannot play with the meaning, it should not change the meaning. Okay, so these are some musts and some rules and checklists that you need to understand about paraphrasing. Furthermore, using the passage found on the following pages, please utilize four musts and five finger tests to determine why one paragraph is good and the other one is bad. अब आप सोच रहे होंगे ये फोर मस्ट्स एंड फाइव फिंगर टेस्ट क्या है. अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पांच वर्ड्स इकट्ठे आएंगे from the original text in your paraphrase, then it is going to be a bad paraphrase and it is a plagiarized paraphrase. So अब जो अपकमिंग हमारे पास अभी एक एग्जांपल आएगी उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है और फोर मस्ट ये है that it should be in your own words, it has to be longer or as the same text and same length and should convey the same meaning. Now this is paraphrase example 1. ठीक है. अच्छा, इसमें आपको डिफरेंस नजर आ रहा है. एक एग्जांपल दी हुई, एक रेफरेंस दिया हुआ है टॉप पे. That this particular passage is from Trotta's Ellison, Plagiarism, the best defense is a good defense. Information Today, September 2013, and then General Office File, Web 2, December 2013. Now let's read. The original text is at the left. Okay? आपका जो original text जो मैं पढ़ रही हूँ, this one, right? The one that you can see with the tick. Plagiarism doesn't only happen in student essays. In March 2013, the National Science Foundation began investigating nearly 100 potential cases of plagiarism within its funded proposals. In the same month, Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, Wisdom, and Wonder from the
World of Plants was delayed due to at least a dozen uncited passages that were reportedly taken from multiple sources. According to Stephen Livingston, Washington Post article on March 19, 2013. It simply is talking about that what happened in 2013 and which foundation found out that 100 plus instances were copied. Now कॉपी किस तरह से होती है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से यूज करें किसी बुक से एज इट इज ले लें इस तरह की सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती हैं अनसाइटेड सिंपली मींस कि उसको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया दिस इज आवर ओरिजिनल टेक्स्ट then the other side that I'm going to read now is a good example of paraphrase here, right? Let me check it with the color. This one. I'm going to read this one now. So this is a good example because in this passage, we can see that word choices are able to reflect author's original thought processes. Nothing has been added or criticism has not been added, but it does not have too many simple synonyms from the original text as substitution. If you look at the length, you can see that the good example, which is ticked with the red color, has more words than the original one. Now I'm going to read. Alison Trota illustrates in her article Plagiarism, the best defense is a good offense, that the act of omission, otherwise known as plagiarism, is not solely relegated to classroom essays. Inquiries were made in March of 2013 by the National Science Foundation into at least 100 examples. You can see one thing particularly over here that when they mention NSF, for the first time, they use the full form. And then they have a bracket, and in the bracket, you can see the acronym. This is the basic understanding कि whenever you mention an institution, first जब पहली दफा उसे mention किया जाता है, तो you have to write full words. You cannot mention abbreviation or acronym directly. First, you have to go for the full words. Okay, inquiries were made in March of 2013 by the National Science Foundation into at least 100 examples of plagiarism in research proposals. She also observed that during that time period, Steve Livingston of the Washington Post notes that there are nearly a dozen plagiarized passages that can be found in Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, Wisdom, and Wonder from the World of Plants. So you see, बात वही की गई है उसको पैराफ्रेज किया गया है पूरे पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है कोई अननेसेसरी वर्ड्स को एज इट इज नहीं लिया गया अब देखिए इंस्टीट्यूशंस के नाम किताबों के नाम राइटर्स के नाम तो सेम ही रह सकते हैं ना यू कांट चेंज देम बट द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस दे हैव बीन paraphrased and changed to such an extent that it looks like that it is an original attempt by the other person ठीक है सो ये चीजें आपको समझनी है. We'll take a break of 1 minute so that you can read it once again, and then we move forward to the bad example of the same example over here ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो bad example क्यों है. Meanwhile, somebody is saying add students. Everybody has been added, bete. I don't see anybody in the lobby. और कुछ students होते हैं, they can't let go of their habits. They're saying they're just bothering you for no reason. So relax, Suleiman. All right, I hope you've read the good example over here. Now let's look at the bad example. The text is the same, but how is it a bad one? We'll see. I'm going to read exactly the bad one, which tells us about the paraphrased version, the one with the green tick on your screen. Alison Trotta states in her article, plagiarism, the best offense is a good offense, that student essays are not the only place for plagiarism. The National Science Foundation began inquiries in March of 2013 into 100 possible cases of plagiarism in funded research proposals. Also, on March 19, 2013, Stephen
Steve Livingston of the Washington Post reported that Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, Wisdom, and Wonder from the World of Plants, contain a dozen plagiarized passages from numerous other sources. I would like one of you or two of you to explain how is it a bad attempt. कौन बता सकता है? दोबारा पढ़ लें बेशक और बताएं कि ये bad attempt क्यों है. जी, who can tell? Nobody? Well, this particular attempt, sorry, attempt is a bad attempt because many words are taken as it is from the original text. The structure of the entire passage is the same. They are using the similar kind of words. For example, you can see NSF began inquiries in March of 2013, right? It's the same. There's no change that you can see. And then if we talk about passages, dozen passages, plagiarized passages, the same wording, the five finger test or the four musts, they are not being applied over here. So this is paraphrasing for you, in which you must change the language structure at all costs so that it doesn't resemble to the original text. Then we have summarization. So paraphrasing is completed. I will send a chapter to your LMS as well as your CRs. You will bring that chapter in the class so that we can practice paraphrasing. However, summarization. The American Heritage College defines a summary as a presentation of body of material in a condensed form or by reducing it to its main points. Its origin is from Middle English, which is medieval Latin, which is summarizes, and the Latin summa, meaning the concerning of the sum. Perhaps the basic understanding that we need to, be able to achieve by the end of this lecture is that a condensed version of our original passage of writing, it provides only the main points and eliminates extra details, but a summary is considerably shorter than the original work. ये आपने याद रखना है कि it's important कि हम मेन पॉइंट्स नहीं स्किप कर सकते हैं लेकिन जो मेन पॉइंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं we can skip those in summarization. Then summarization also has a checklist. The checklist is somewhat similar to the checklist that we discussed in paraphrasing. Reread the original passage carefully in order to fully understand the concept and author's meaning. Identify the main points of the message or passage, of course. Rewrite the passage using only the main points of the original works. For example, the thesis statement, the main supporting points, the big points, and conclusion. Then compare your text to the original and use the vision text. Now, what is the vision test? The original work must be twice the size as your work. जैसे मैंने आपको कल या अभी बताया होगा, जैसे आयशा ने भी शुरू में आपको बताया, that it is important to use 50% of the original text. So,
आपने जब वो विजन टेस्ट यानी आंखों से आप उसका टेस्ट करेंगे तो यू शुड बी एबल टू सी अ क्लियर डिफरेंस कि ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर 10 लाइंस हैं तो आपके समराइज्ड वर्जन में 5 लाइंस होनी चाहिए, राइट? सो दिस इज योर विजन टेस्ट. For paraphrasing, we had the finger test, 5 finger test, and for the summarization thing, we have vision test. ये आपने याद रखना है because in the exam or in the tests and quizzes, there is a possibility that I will give you different paraphrased and summarized texts, and then I can ask you to tell me whether it is correctly done or not. तो वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको ये सब पता होगा. Then the 4 musts of summarization are also mentioned over here, just like paraphrasing. Be in your own words. The text has to be in your own words. It has to be shorter, which means 50% of the original text. It can contain some of the original words, but only the words. And when you use those words from the original text, you have to use quotation marks. ऐसा नहीं होगा कि आप वो word as it is use कर ले. You have to use quotation marks, जिन्हें inverted commas भी कहते हैं. Then convey the original meaning only, but you do not have to add any evaluation, criticism, point of view, or any comment to the original work. यानी जो काम जिस तरह से लिखा गया है, उसी तरह लिखना है, right? So it is important to remember 4 musts and vision test for summarization exercise. Again, we have the same, we can say, passage over here, but today we are going to see how we can write at this point, we're going to see that how we can write a good example of the summary. Original text, again, उसी side पे है जहाँ पहले था. Let me check it for you so that you know. The green one is the original text, and I am going to read the red one, which is the summarized version, right? When I say green and red, I mean to say the text that I'm making on the screen right now. Okay. So the good example. Now, in this particular passage, you'll see that the word choices, they reflect the author's original passage, and they are in the condensed form. They are in the very compact version. अगर आप इसका vision test करें, नीचे जो बेटे आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ ठीक है इंफॉर्मेशन है. हमारी जो समरी है वो सिर्फ ये है जो मैंने बॉक्स में आपको दिखा दी है. सो विजन टेस्ट किया जाए तो ये काफी ज्यादा है और वो उससे हाफ हो जाता है यहाँ पर, राइट? Alison Trotter, in her article Plagiarism, the Best Defense is a Good Defense. Plagiarism is not a solely a classroom occurrence. She notes that in March 2013, both National Science Foundation and the Washington Post reported multiple plagiarism incidences by professionals. अब देखिए प्रोफेशनल्स में वो सारा कुछ आ जाएगा जो उन्होंने बात की. उन्होंने 100 का वर्ड यूज नहीं किया. इंस्टेड दे यूज्ड मल्टीपल passages and incidences were found. अब किसी को जानना है कि कितने थे तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट जाकर पढ़ सकता है. This is how you write a good summary. Now let's look at the bad version of it. First of all, let's do an eye test. So it's quite, lengthy in the length. Very few differences we can say, maybe just 1 line or two. Therefore, this is a bad example. Vision test ke mutabik, it's a bad example. Now let's read it. Alison Trotter, in her article, Plagiarism, the Best Defense in a Good Defense, plagiarism is not solely based on student essay. In March 2013, the National Science Foundation began an investigation into almost 100 incidents of plagiarism contained in its funded proposal. Why is it a bad version of it? देखें, हमें सिर्फ बताना है कि plagiarism के incidences हुए थे. हमें 100 का word लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? Therefore, ये extra information, ये supporting detail add हो गई. Therefore, this is a bad version. Then repetition है कि also in 2013, Washington Post reporter Stephen Livingston reported that Jane Goodall's new book, multiple incidences of plagiarism from varied sources. Again, सारे नाम और ये सब लिखने की जरूरत नहीं. Let's go back to the good version. उसको दोबारा देखें तो उन्होंने simply यहाँ लिखा हुआ है कि National Science Foundation and the Washington Post, यानी उन दोनों रिसोर्सेस को इकट्ठा करके उन्होंने कह दिया है कि दे रिपोर्टेड मल्टीपल प्लेजरिज्म इंसिडेंसेस बाय प्रोफेशनल्स.
ठीक है, उन्होंने ना नाम लिखा ना ये सब कुछ, लेकिन यहाँ बैड वर्जन में वी कैन सी के नाम भी लिख दिया है और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो गए हैं, therefore this is a bad version of summary over here. These are the works that have been taken into consideration while talking about these concepts, summarization and paraphrasing. Then I have pasted a difference from pedia.com. Usually in this website, you will find many differences and they are authenticated. So summary is written in the green color and paraphrase is written in the blue one. Summary is a brief statement or account of the main points of a text. Paraphrase is rewording of a text to clarify the content. Summary is shorter than paraphrase. Paraphrase is longer than a summary. Summary can be selective. Paraphrase has to be specific. Summary has the ability to condense the text. Paraphrase clarifies the text. वो उसको आसान बनाता है और बेहतर कर देता है, right? क्वालिटी पैराफ्रेज के लिए एक और चीज है, ये भी आप देख सकते हैं. तो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड समराइजेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क. जी आशा बताएं. Ma'am, is there any specific like words limit for paraphrasing? Like you have mentioned, कि summary में it's given that 50% of the text. Like, is there any specific limit for paraphrasing also? Yes, paraphrase has to be the same length or maybe more than the original length. लेकिन वो कम नहीं हो सकता, यानी 100 वर्ड्स हैं तो आपने 100 वर्ड्स में ही पैराफ्रेज करना है या उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होते. जी बेटे, any questions, anybody else? No questions? Everything is clear? That's interesting. All right. So the chapter that I sent your classmates, let's have a little discussion over it. And at 3:30 we can start tenses. Okay? So half an hour we can have a discussion on the text that is there so that once you come to the class you have clarity about it. Let me open that text here. Let me see. I can, yes, I found it here. मैं आपको सिर्फ सरसरी बता देती हूँ कि बेटे आपने ये चैप्टर किस तरह से समझने की कोशिश करनी है. Open it on the screen so that
This is the chapter that I've been referring to. I hope you have received it. Please get a print of it. Some of you were asking about how and when to bring the text or the printed form. Bring it in the next class, which is going to be on Thursday, right? You should have it with you. The chapter is called Communication, right? There are certain warm-up questions over here, which we'll do on campus, of course, but let's discuss this particular passage over here. Do you know the difference between a passage and a paragraph? What is the difference between a passage and a paragraph? बेटा अटेंडेंस हो चुकी है, I've taken your attendance. और एक दफा और ले लूंगी so that अगर कोई disconnected था तो I'll see, I'll cross check. G, what is the difference between a passage and a paragraph? Who would like to share? किसी को नहीं पता? नहीं भी पता तो you can write that I don't know, not clear, so that I know that you don't know, so I can move forward. G, Ifra. Paragraph is a of sentences. It contains group of sentences which can be grouped under the same topic. And passage is extracted from various novels and texts, etc. Okay, that's fine. What about Saleha? बेटे आप बताएं. मैम जो हमारे पास पैराग्राफ होता है वो मतलब कुछ वर्ड्स को मिला के बनाया जाता है और जो पैसेज होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स को बन के एक पैसेज क्रिएट होता है. Very good. That's correct. So, this particular passage, which you can see on your screen, the role of humor is a passage. Do not confuse yourself कि इसके साथ ABC लिखा हुआ है तो A जो है वो हमारा पहला passage है. No. All of these paragraphs, when they come together, they make a passage. So ABCD is written over there so that you can actually attempt all the exercises which are attached to it. Of course, once we have read the entire passage, you'll understand कि इनके answers कैसे देने हैं. We are going to utilize our understanding of contextualized reading, reading between the lines, skimming, scanning, and much more. We also talked about critical reading, active reading. तो ये सब type की जो reading हमने आज तक classes में पढ़ा है, उसको utilize करते हुए इन exercises को we'll try to solve. So the role of humor. How important is humor in your life? When you turn on the television, do you watch the news or a comedy program? When you read your local newspaper, do you turn to the comics first of all? Is your best friend the one who makes you laugh the most? There is an old saying, laughter is the best medicine. Numerous studies now show that there is a lot of truth in that idea. Right? So this is an introductory paragraph where they're giving us an introduction about laughter and they're telling us how it is there in the local newspaper. The reason I'm explaining and discussing this paragraph with you and this entire passage with you so that you can try and finish and solve this chapter at your own in Thursday's class, and it will be highly recommended कि आप ये already करके खुद से आए. नहीं तो कैंपस पे आपने खुद ही करना है and I will not be providing any further explanations for it. So listen carefully. If the voice is not clear and you have many issues like you always do, that's all right. Um, I will send you a recording of this lecture.
Then we have paragraph B. The official term for the scientific study of laughter is galatology. It has been shown that laughter results in a number of measurable physical reactions that are beneficial for health. According to the Encyclopedia Britannica, these include increases in the heart rate and circulation, a reduction in blood pressure, an improvement in lung capacity and blood oxygen levels, and all over relaxation and muscle tension. So laughter is helpful in all these particular problems that they have mentioned. For example, circulation, blood pressure, and blood oxygen as well. It has also been shown to increase tolerance of pain. Reference is given of a psychologist called Sultanoff in an article by WebMD. Laughter changes our mood and creates a sense of well being. It is vital for human interaction. In fact, to be described as humorless is a criticism. Yes, these days you must have observed that if somebody doesn't know how to crack a joke or be funny, people tend not to talk to them. मतलब आजकल मजाक एक मजाक करना और मजाक उड़ाने में फर्क होता है. What we are talking about is मजाक करना, where you're cracking jokes which are not pinpointing, disrespecting or bullying somebody. ठीक है. और किसी का मजाक उड़ाना एक अलग बात है, वो एक डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटी होती है. ये ह्यूमर का मतलब सिंपली ये है जहां पर आप ऐसी बात कहते हैं कि सबको हंसी आती है. दैट इज बीइंग ह्यूमरस. Even in times of distress, human can provide temporary relief. For all these reasons, laughter therapy sessions are often prescribed to help people cope with physical, mental, and spiritual issues. Laughter is considered to be a motor reflex, much like the way the pupil in the eye contracts in bright light. Okay, what is a motor reflex? Motor reflex क्या होता है? No idea what is motor reflex? Well, motor reflex simply refers to your physical activity that can be there. When we laugh, of course, many muscles they are contracted. Contract करना होता है कि फैल जाना और सिकुड़ जाना. यानी there is if you know um, a movement, a physical movement there. The only biological function that it seems to serve is relief from tension. It involves a physical response to a comment or action. This response is an involuntary contraction of 15 facial muscles along with the associated often uncontrollable noise that we term laughter. There are more than 20 facial muscles that we have, and when we laugh we definitely have 15 muscles in action. So ये आपके facial expressions और facial muscles की exercise है. It's kind of an exercise, the laughter. The mystery is the relationship of this simple physical response to a sophisticated mental activity. This is a phenomenon that has puzzled philosophers for centuries. It also means there is a clear indicator of the presence of that elusive quality, humor. If people do not laugh, then the joke was not funny. Now they are going to give us a historical understanding of the same concept. In ancient society, much humor was considered to be malicious or based on contempt for the unfamiliar to be enjoyed at the expense of somebody else. Contempt का मतलब होता है गुस्सा, malicious का मतलब होता है bad or unneat, right? So in the ancient society, it was considered that if somebody was not important, people would laugh at them, laugh about them in order to disrespect them. Laughter was even likened to be a dagger, यानी वो एक खंजर की तरह होता था कि अगर वो शख्स उस
सोशल स्टेटस से नहीं है, उस जगह से नहीं है, तो उस पे हँसा जाता था, उसके लिए हँसा जाता था और ये डिसरिस्पेक्ट हुआ करती थी। The ancient Herbu's sense of humor tended to emphasize contempt and derision of a range of references to laughter in the Old Testament. 13 were mocking, but only 2 were joyful. Mocking का मतलब होता है again जो आपने usually अपनी classes में भी देखा है आजकल की जो generation है. It has a tendency of laughing at other people. लोगों के साथ हंसना और लोगों पर हंसने में फर्क है. And that is what they are saying over here. Old Testament is the Bible. I hope you know what's Bible. Bible के बहुत सारे versions available हैं and they are talking about the older version of it. That in that older version, 13 people who were important people, they were making fun of somebody and only 2 were joyful. 2 were actually humorous. Similarly, the ancients laughed at foreigners. They regarded them as only pretending to be human. So ancients, yani gods and everybody who was from the ancient world, they thought that um, people who were foreigners and not from their land, they were ridiculed by the fact that they think that they're humans, but they are not. By the 5th century before Christ, there was evidence of humor in ancient Greek art with jokes about Olympians and the Olympic Games. Humor moved into literature soon after with the Greek comedies of Aristophanes. अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये सारा एक historical lesson क्यों दिया गया है? Why do we need to know these? Because we are talking about the role of humor. And whenever we talk about a topic, कोई भी scientific topic हो, literary topic हो, कोई social evil हो या इससे related कुछ भी हो, it is important to, understand when, why, and how it came into being. And that is what they are telling us. जैसे कि अभी तक उन्होंने हमें बताया कि laughter is the best medicine in the recent times. Then they talked about how laughter was perceived. Then they also mentioned that people used to make fun of people and they would laugh at people in order to disrespect and show contempt. And then later on, they talked about that the biblical reference is also there that in Bible it meant something mockery, kind of a mockery for 13 people, but for 2 people it was humor. Next paragraph, that is E. In more recent times, in the English speaking world, we have had many examples of social satire. Social satire ये होता है, अच्छा, do you understand satire? Any idea what is a satire? No, Obad doesn't know. Okay, maybe you know what is irony. Irony क्या होती है? Sarcasm. Well, sarcasm is a little different. Satire is humor. Okay, Hamza, in one sense, yes. Well, irony simply means when you say something and you mean something else. जिसे हम उर्दू में तंज कहते हैं, ठीक है? That is what it is. Satire, on the other hand, as the word suggests, social satire is a representation of a group, community, or a tribe or a nation. For example, बहुत सारे novels and stories जो लिखे जाते हैं, literature में जो हमें मिलते हैं, we talk about them, we read about them, we get to know about the cultural and traditional ups and downs of that era. तो उसमें बहुत सारी चीजों का मजाक बनाया जाता है, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, उन पे सटायर लिखा जाता है. जैसे कि fashion is a very controversial topic. It has been a very controversial topic, and you must have seen कि आजकल जो एक मॉकरी बनाई जाती है, एक सटायर लिखा जाता है जिसमें बात की जाती है that people have started relying on makeup a lot. So अगर आप लिटरेचर पढ़ें, अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो, तो you'll know that satire works that way. Anyway,
Two of the satires have been mentioned over here from the history of English literature. For example, Jonathan Swift's Gulliver Travels in the 18th century and the 20th century publication of George Orwell's Animal Farm. Both of these works, Gulliver Travels is a drama, Animal Farm is a novel, and both of them they talk about the social evils of their society. Gulliver Travels में बात की जाती है कि एक बड़ा इंसान कैसे होता है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता एक इंसान बड़ा तब बनता है जब उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसका करेक्टर पर्सनैलिटी ऐसे हो और Animal Farm is a direct satire on the political problems of 20th century in the set era. On the other hand, in dictatorships such as those of Hitler and Stalin, political humor was seen to be dangerous and was not permitted. Of course, what Hitler did and Stalin did was a tragedy for millions, and making a satire out of it would be a disrespectful thing. Therefore, it's not permitted, although I've seen people making it anyway. However, this did not mean it did not exist, but rather it was forced underground, which only added to its power. So इस तरह के जो satires लिखे जाते थे जिन्हें openly नहीं दिखाया जा सकता था वो फिर underground यानी छुप छुपा के किया जाता था. Then we have these days humor in the West is very influenced by the mass media. The canned laughter of sitcoms on television and the wide audiences reached by popular comedians have led to a rather commercialized style of humor. And I can vouch for it because I am from another generation. I'm a millennial, and I have seen a very drastic change in the comedy. In the name of comedy, the direct disrespect, the racism, the body shaming, and direct intent to harm, and many things are there in the name of sitcom. बहुत गलत बातें भी humor के नाम पर आजकल चिपकाई जाती हैं. And I don't know why, for some reasons, I do not resonate and understand most of the time what they try to say. Maybe because मैं थोड़ी मतलब दूसरे एज से कर ले थोड़ी बड़ी हूँ तो मुझे नहीं समझ आती लेकिन I see that people these days, students, youngsters these days, they definitely enjoy those dark humors, and because it's so commercialized, because it is so cool, this is so in मतलब कि swag की बात है, इस तरह की चीजें चलते चलाते बहुत गलत बातों को ह्यूमर के नाम पर मास मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए disseminate किया जाता है. It is widely used in advertising in an attempt to make ads more memorable and enjoyable, but this is not always successful, especially given the repetition of use of such ads. A response to this has been the creation of humorous sites, blogs, videos such as those on YouTube, which are imaginative and they reach a huge audience. अच्छा ये जो particular chapter है ये कम से कम 15 से 20 साल पहले लिखा गया था. Therefore वो TikTok और ये YouTube Shorts और ये जो छोटे छोटे रील्स अब आते हैं तब वो मेंशन नहीं है. बट इफ वी हैव टू रेजोनेट तो अब आपने देखा होगा कि ये जो रील्स आती हैं इसमें फनी कंटेंट भी होता है. मोस्ट ऑफ इट इज नॉट फनी बट देर आर सम ऑफ देम जो वाकई ओरिजिनल फनी कंटेंट बनाते हैं विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडीज फीलिंग. दैट इज आल्सो अवेलेबल, मगर उसको एक ह्यूज ऑडियंस नहीं देखती, उसको एक सर्टेन ऑडियंस देखती है. ह्यूज ऑडियंस उसी को देखती है जो फैशन में चल रहा है और वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है एट प्रेजेंट टाइम ऑफ कोर्स. देन वी हैव द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. Humor is an important form of communication that is common to all societies, although the same things are not always considered funny in different cultures. For example, in Pakistani culture, if something is funny, maybe in Western culture, it's not considered funny. There are many cultural exchanges जो कि बहुत different होती हैं from different cultures. Within Pakistan, we have many layered levels of cultures, and जो एक पंजाबी कल्चर में चीज एक्सेप्टेबल होगी वो सिंधी कल्चर में शायद एक्सेप्टेबल ना हो. So these differences they will be there, and humor also fluctuates on the basis of these cultural differences as well. The use of humor influences interaction patterns within a group and affects the social structure of the group. In a positive form, humor increases the fun factor of a work or social situation by generating warmth and trust. Sharing laughter is a signal of acceptance within the group.
Equally, of course, humor can be abrasive, resulting in friction and uneasiness in social group. Used inappropriately, it can lead to job loss or social isolation. Ideally, though, it will function in a positive way to enhance interpersonal relationships by reducing tension, improving communication, and helping individuals cope with day-to-day situations. अब ह्यूमर को कितना कहाँ और किसके सामने किस सिचुएशन में यूज करना है, वो जिसको सही से आता होगा तो ही वो सक्सेसफुल है। जस्ट बिकॉज आपको लगता है आप फनी है, जरूरी नहीं है कि अगले शख्स को भी लग रहा हो कि आप फनी है। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं अबाउट the humor and how it is perceived that they have mentioned in this unit. I hope you've understood. Now, on the basis of this reading, आपने ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है और ये आपने करके लानी है, ठीक है? और आपने मुझे बताना है आपको क्या समझ आई। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको ये एक्सरसाइज नंबर 4 बताती हूँ कि ये कैसे हो रही है। Skimming to find the text structure and the main idea. Read the first sentence only of each paragraph in the reading passage. ये हमारा पैसेज है और हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ने को कह रहा है वो, ठीक है? टेक नो मोर देन 5 minutes टू डू दिस एंड देन आइडेंटिफाई कि हर पैसेज किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कह रहे होंगे एबीसी लिखा हुआ है ना, दिस इज पैसेज, दिस इज एन एंटायर पैसेज एंड दिस इज पैराग्राफ नंबर ए, पैराग्राफ नंबर बी, पैराग्राफ नंबर सी। तो आप बताएंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पे बेस्ड है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट पे है या कॉज एंड इफेक्ट पे है। तो इस तरह से आपने हर पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करना है। इसी तरह से और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करके लानी है और ऑन कैंपस मुझे चेक करवानी है। इज इट क्लियर? If it is, please write in the chat box that it's clear. ठीक है. So most of you are saying that you have understood what to do with the activity. Good. So I'm not going to do this the entire chapter with you. वो आप खुद करेंगे. Now it's 3:30, I believe. We'll take a break of 10 minutes and then we start tenses. ठीक है? You have to stay connected. You can't leave. ठीक है, मैंने आपके फर्स्ट हाफ की अटेंडेंस पे टेक ले ली है, वो मैंने यहाँ डाउनलोड कर ली है। सेकंड हाफ की अटेंडेंस में अराउंड 4:25 या 30 बीच में भी ले सकती हूँ। आई विल डिसाइड व्हेन टू टेक इट। सो स्टे कनेक्टेड, डोंट लीव। बेटे, जब आपसे कुछ पढ़ाई रिलेटेड बात की जाती है तब तो आपको याद नहीं आता है कि बोलना है। प्लीज डू नॉट चैट। इफ यू वुड लाइक टू चैट, प्लीज आप अपने व्हाट्सएप पे जाके बेटे चैट करें। दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, दिस इज एन ऑफिशियल क्लासरूम। ठीक है, आप किसी कॉन्सेप्ट में नहीं बैठे हैं। Yes, attendance will be taken once again so that I know that you were here till the end.
Okay, I hope everybody is still connected. 10 minutes break was sufficient because somebody wrote in the chat box their head hurts. I wonder what they were doing before the class that their head is hurting. Anyway, so we are going to talk about tenses, something that you already know and you are master at because most of you must have scored very good in this section of your exam when you were doing your HSSC or relevant degrees. Anyway, so we'll quickly look at tenses one by one. Um, I will not be discussing multiple examples for each type, of course, but then I expect you to know the multiple examples at your own. I'll attach a helpful and a reference chapter in your LMS. You can take help from there as well. So tenses, what are tenses? They are able to denote the time of action. They are there to tell us about the time when the action took place. They show us how the work is done or when the work is done, not how, I mean when the work is done. They are divided into three major parts: present tense, past tense, future tense. It's also called progressive tense in some books. If you will read, you'll see. Then they are further divided. First, we'll talk about present tense, in which first we'll talk about simple tense and then we'll talk about the versions of simple tense. What is a simple tense? It is used to denote scientific facts, universal truths, and work done on daily basis. For example, she writes a letter. She does not write a letter. Does she write a letter? So first is assertive rule, then we have negative rule, and then we have interrogative rule. जिसको आपने शायद बचपन में कहीं पढ़ा होगा कि positive sentence, negative sentence, and question sentence. So there are different names for the same thing. That is, she writes a letter. This is simple tense, simple present tense. She does not write a letter. This is simple negative tense. And then does she write a letter? So उसके rules भी आप box में देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं. For example, she writes a letter. We have subject plus verb with SNES and then object. तो ये सारा आप पढ़ेंगे खुद से और अगर कोई question हो तो you can definitely ask. So simple tense, we have three variations. One is she writes a letter, she doesn't write a letter, does she write a letter? Then we have interrogative negative assertive. Does she not write a letter? इसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि assertive और negative को interrogative के साथ जोड़ दिया है. So we have four versions over here. She writes a letter, she does not write a letter, does she write a letter, does she not write a letter. अब आपने क्या करना है बेटे, आपने चैट बॉक्स में मुझे इसी तरह से 4 सेंटेंसेस बनाकर दिखाने हैं. कोई भी लाइन ले लें. अब देखिए शी राइट्स अ लेटर ना, इस तरह का एक सिंपल सेंटेंस बनाएं और उसका नेगेटिव रूल, इंटेग्रेटिव रूल और इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव रूल बनाकर चैट बॉक्स में लिखें. यू हैव 2 to 3 minutes to do this. Go ahead. Okay. बेटे किससे लिखा है? Okay, 003 ने लिखा है he write a letter. That's incorrect. Irsa Gary, she cooks food. I drive a car. ठीक है, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया ना. चारों वर्जन्स लिख के बताने हैं. जैसे कि अली ने लिखे हैं he plays cricket, he does not play cricket, does he play cricket, does he not play cricket. So वो आपका चौथा जो है मोहम्मद अली, वो इस तरह से ऐड होगा. Then इरसा ने सेकंड सेंटेंस लिखा है she doesn't look cooks food. अच्छा, does not आ गया तो फिर cooks नहीं रहता है, राइट? क्योंकि हमारे पास does आ गया ना, s का इजाफा हो गया तो वो cook हो जाता है. She doesn't cook food.
अच्छा, आपको शायद चैट नहीं यूज करना आता, आप एक ही बेटे मैसेज में चारों सेंटेंसेस लिखोगे तो दैट विल बी easier for me to understand and for you as well. Moise says he kicks the ball, he does not kick the ball, does he kick the ball, does he not kick the ball? Very good. So Moise has understood what I'm asking for. Then Aisha says she likes to eat mangoes, she doesn't like to eat mangoes, does she like to eat mangoes, does she not like to eat mangoes? That's correct. Then Vanya has added she plays soccer every day. She does not play soccer every day. Does she play soccer every day? अच्छा, Saturday लिखा हुआ है, sorry, it's not every day. Then does she not play soccer every day? Good, very good. अहमद लिखते हैं जी, she does not go to school. Does she go to school? She goes to school. Does she not go to school? Very good. मुजम्मिल कह रहे हैं she makes tea. She does not make tea. Does she make tea? अच्छा, शी डज नॉट मीट टी के साथ क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा मुजम्मिल? वो तो क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है बेटे, थर्ड वाला है। अच्छा, अब्दुल रहीम कह रहे हैं ही प्लेस फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल? हेलो डज नॉट, अच्छा, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल? लास्ट टू के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं ऐड करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। पंक्चुएशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? इफ्रा कहती है कि शी cleans her room, she doesn't clean her room, does she clean her room, does she not clean her room? Good, very good. शहरयार कह रहे हैं he eats apple, सेंटेंस ही गलत है लेकिन चले, he eats an apple, does he eat an apple? He does not eat an apple. चलो सही है, she's my sister, ठीक है। हमजा क्या कह रहे हो? she has a screw loose और loose screw, क्या कहना चाह रहे हो? screw loose क्या होता है? I don't know that. राफे कह रहे हैं the sun rises in the east, the sun does not rise in the east, does the sun rise in the east, does the sun not rise in the east? Good. 052 कह रहे हैं she walks to school every day, she does not walk to school every day, does she walk to school every day, doesn't she walk to school every day? Very good. बेटे हमारा जो चौथा सेंटेंस है वो आपका गलत है, आप वो प्रोग्रेसिव सेंटेंस में चले गए हैं। कुकिंग कहाँ से आ गया इसमें? ठीक है, ये आपने देखना है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। It is used to express an action taking place at the time of speaking. यानी जब आप कुछ कह रहे हैं तो उसी वक्त ये हो रहा है। This action is taking place. तो इसमें भी हमारे पास चार ही हैं। First is she is writing a letter. She's not writing a letter. Is she writing a letter? Is she not writing a letter? तो मुझे समझ आ गई है, जितने आपने रिस्पॉन्स दिया है, most of you do understand what I'm trying to get at. So this is good. And I hope कि जब हमारा कोई क्विज होगा इससे रिलेटेड तो आप कर पाएंगे। Then we have present perfect. It is used to show an action that has started in the past and has just finished. यानी अभी अभी जो complete हुआ है। She has written a letter. She has not written a letter. Has she written a letter? Has she not written a letter? इसके रूल्स आपको बॉक्स में नजर आ रहे हैं, ठीक है? अगर रूल्स आपको नहीं भी इतने आते, आपको बस सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, वो भी आपने देख रहे हैं। वैसे रूल, अगर सेंटेंस बनाना आता है तो ऑब्वियसली आपको रूल भी पता ही होगा। Then we have present perfect continuous. This tense shows the action which started in the past and is still continuing. For example, she has been writing a letter. She has not been writing a letter. Has she been writing a letter? Has she not been writing a letter? ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट वी हैव सिंपल प्रेजेंट, देन वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो दिस इज हाउ आपका क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। देन वी हैव पास्ट टेंस। Tense symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past. यानी जब भी हम कोई बात करते हैं या तो पास्ट की बात होगी या प्रेजेंट की या फ्यूचरिस्टिक होगी, टाइम का लेना देना हमारे सेंटेंसेस में हमेशा ही रहता है।
Past is before now, of course. Simple past is there, past continuous, past perfect and past perfect continuous. तो ये चार versions हैं past tense के. Now, if we talk about simple past, it is used to indicate an action completed in the past, as the name suggests. It often occurs with adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. For example, I played football when I was a child. It is also used for past habits. I played football when I was a child. यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है. फिर हमारे पास है she wrote a letter. ठीक है. She did not write a letter. Did she write a letter? अरे एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी. एनी आइडिया वजह ऐसा क्यों होगा कि जब हमारे पास डिड आ जाएगा तो सेंटेंस का जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म क्यों नहीं रह जाएगी वर्ब की वजह. जी अरीहा बताएं. टीचर क्योंकि डेट कोड एक सेकंड फॉर्म है तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती. वेरी गुड. बिकॉज डिड जो है हमारे पास ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हो जाती है, देयरफॉर हमें जरूरत नहीं है कि जो हमारे पास वर्ब है उसकी भी सेकंड फॉर्म लगाएं. ये आपने याद रखना है. ये यूजुअली थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाती है करते हुए. तो रिमेंबर दिस दैट व्हेन वी आर मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वो डिड शी राइट अ लेटर होगा, रोट अ लेटर नहीं होगा. देन डिड शी नॉट राइट अ लेटर, राइट. सो सिंपल पास्ट में हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल हैं वो ये हैं. शी रोट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड शी राइट अ लेटर, डिड शी नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, सेम है जैसे आपने प्रेजेंट के बनाए और बहुत अच्छे बनाए. आई एम रियली हैप्पी. देन वी हैव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन. डिनोट का मतलब बेटे रेफर है, टू रेफर टू एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. आई वाज ड्राइविंग अ कार. रूल हमारे पास वाज और वर है और आईएनजी है. तो इसमें हमारे पास जो चार वर्जन आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटोग्रेटिव एंड इंटोग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. सिमिलर वही जो पहले बात हमने की है. शी वॉज राइटिंग अ लेटर क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी ने आना ही आना है और वॉज एंड वर्ब भी आ रहा है. शी वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर. तो इस तरह से ये बन जाएंगे. देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. The patient had died before the doctor came. ठीक है, past perfect. यानी एक एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और वो पूरी तरह हुआ कि नहीं उसके बारे में बात हो रही है. आगे देखिए असर्टिव. इसके भी चार वर्जन हैं सेम. She had written a letter. She had not written a letter. Had she written a letter? Had she not written a letter? फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. पहले हमने बात की है सिंपल पास्ट की, फिर हमने बात की है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, फिर हमने बात की है पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की. It is used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in the past. यानी वो इस वक्त प्रेजेंट में नहीं हो रहा, पास्ट में ही कहीं पे कंप्लीट हो गया था. I had been learning English in this school for 20 days. ठीक है, अब हमारे पास चार वर्जन हैं सेम इसी के. She had been writing a letter. She had not been writing a letter. Had she been writing a letter? Had she not been writing a letter? Okay. तो हमारे पास पास्ट टेंस के जो चार वेरिएशंस हमें पता होने चाहिए. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. देन वी हैव फ्यूचर टेंस. Time and tide wait for no man, so a period of time following the moment of speaking or writing is called a future tense. She will write a letter. अब देखिए टेंस के साथ उन्होंने लिखा हुआ है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और फ्यूचर से आगे जो हमारे पास पॉइंट बनता है वो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये चार वेरिएशंस हमारे पास फ्यूचर टेंस के भी पाए जाते हैं.
Simple future tense क्या है? This tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after some time or in future. और rule क्या है? Will and shall and verb की first form. In future tense, helping verbs shall is used with I and we. जबकि आज के दौर में मैंने बहुत कम देखा है कि लोग अब actually I shall या we shall कहते हैं, will ही कह रहे होते. लेकिन still, in standard version of English, we are supposed to use shall. Helping verb will be used with all others when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something. Use of will shall is reversed. Will is used with I and we and shall is used with others. वो कब होता है? सिर्फ इन कंडीशंस में जो यहाँ पर लिखी हुई. In general speaking or generally speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all. Now, the four versions that we need to understand: positive, negative, interrogative, and interrogative negative sentences. She will write a letter. She will not write a letter. Will she write a letter? Will she not write a letter? तो ये तो simple future tense तो बहुत आसान है. What about future continuous tense? ठीक है, इसके भी चार versions देख लेते हैं. It is used to express an ongoing or continued action in future. He will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. In this example, the action will start in future, which is tomorrow, of course, and action is thought to be continued till sometime in the future. जो कुछ हो रहा है future में हो रहा है, इसका past से या present से कुछ लेना देना नहीं है. Future continuous tense, right? We use the future continuous to talk about something that will be in progress at around a time in future. Rule is will and shall with be and verb first form and ing. So we have a sentence. We have four versions again. She will be writing a letter. She will not be writing a letter. Will she be writing a letter? Will she not be writing a letter? So this is future continuous tense. Then we have future perfect tense. It is used to express an action which will happen in future and will be completed by a certain time in future. We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future. For example, they will have shifted the house by Sunday morning. अब ये हो चुका होगा. उर्दू में अगर आप इसे सोचें कि संडे मॉर्निंग को घर की शिफ्टिंग हो चुकी होगी, सो फ्यूचरिस्टिक है लेकिन हो चुका होगा यानी कंप्लीट हो चुका होगा. So she will have written a letter. She will not have written a letter. Will she have written a letter? Will she not have written a letter? यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है sometimes students जब लिखते हैं तो mistake कहाँ पर होती है? Interrogative sentence में. Will she have written a letter? I have seen के बच्चे यहाँ पर थोड़े से confuse हो जाते हैं, इसलिए याद रखें कि third form नहीं आना है. Will she have write a letter नहीं आ सकता. Wrote a letter नहीं आ सकता किसी भी केस में. ये अपने माइंड में रखना है. Then we have future perfect continuous tense. It is used to talk about actions that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future. If there is no time reference, then it is not a future perfect continuous tense. This is the most important cue for this particular type of, you can say, tense. ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि if there is no time reference, exact timing नहीं पता है, then it is not a future perfect continuous tense, क्योंकि उसकी शर्त ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं पता है कि फिक्स टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा. Without continued time reference, such sentences are future continuous tense. ठीक है? For example, this time tomorrow, I will be enjoying the cricket match in the stadium. It is also used to talk about planned actions or actions expected to happen. They will be saying, staying for a weeks. The future perfect progressive sentence or tense emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. Rule again, will shall hai, have been hai, first form and ing hai. She will have been writing a letter. She will not have been writing a letter. Will she have been writing a letter? Will she not have been writing a letter? So these are the basic tenses जो मुझे पता है आपको मुझसे बेहतर आते हैं, already आते हैं. So I thought I should share some basic understanding regarding these with you so that you know कि आपको ये पता होने चाहिए. एक मैंने और डॉक्यूमेंट आपके ना गूगल क्लासरूम नहीं आपके LMS पे अपलोड किया है.
Okay, can you see a document which has a table in it? आपकी स्क्रीन पे आपको एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा बेटे जिसमें एक टेबल बना हुआ है टेंसेस का। यस यस, ठीक है। तो ये जो है ये एक कॉम्पैक्ट वे है टू लुक एट ऑल द टेंसेस दैट वी जस्ट डिस्कस। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल भी है और इसमें मैं आपको ये जूम करके बता देती हूँ। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिग्नल वर्ड्स कौन से हैं? सिर्फ ये नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। इसका यूसेज क्या है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्म कौन सी यूज होती है, स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है, और उसके वही यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, लेकिन हमने 4 डिस्कस किए हैं। लेकिन ये तो आपको अब समझ आ गया ना बेटे कि आई वर्क, आई डू नॉट वर्क, डू आई वर्क, ही वर्क्स, ही डजंट वर्क, डज ही वर्क, डज ही नॉट वर्क। तो वो फोर्थ वर्जन आप इस टेबल में बेशक खुद ऐड कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एट अ ग्लांस बता देता है कि हमारे पास सिंपल टेंस के 4 वर्जन्स हैं। ठीक है, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी। तो ये आपने देख लेना है, ये दोनों अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपके साथ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव याद रखिएगा कॉन्टिन्यूस को ही कहते हैं, डिफरेंट नेम है बट बात वही है। आर द टेंसेस क्लियर? ये एक रिविजन थी, एक क्या कहते हैं, एक रिविजिट था जो हमने डिस्कस किया। यस अब्दुल रहीम बेटे, इट्स अवेलेबल। मैंने अभी अपलोड किया, लेट मी रीचेक वेदर आई हैव और नॉट। यस आई हैव अपलोडेड, आप चेक कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 13 में आपको ये मिलेगा। Now, if you have any questions, please go ahead and ask. Everything is clear? और yes, please try to finish that chapter। वो बेटे चैप्टर भी मैंने ना आपके लेक्चर नोट्स में ही अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 10 में आपको वही चैप्टर कम्युनिकेशन वाला मिलेगा जो आपने सॉल्व करके लाना है। समराइजेशन, पैराफ्रेजिंग और टेंसेस ये भी आप देख के आइएगा। कुछ नहीं समझ आया है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो क्लास अभी हमने ली है इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। लेट्स होप दैट द रिकॉर्डिंग वर्क्स। यूजुअली टीम्स में कोई इशू आ जाए तो कॉपी नहीं हो, रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, एंड पे नहीं मिलता, बट मोस्टली मिल जाता है। तो आई अपलोड इट इन योर अनाउंसमेंट सेक्शन एज वेल। और आपके इन्हीं रेलेवेंट लेक्चर्स के साथ भी इनको मैं पोस्ट अपडेट कर दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं, इसको दोबारा सुन सकते हैं। एंड आई विल नॉट एंटरटेन एनी एक्सक्यूजेस दैट मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, इंटरनेट नहीं था, मैंने ली नहीं, मेरा ये वो फलाना ढमकाना। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, 4 days बेटे। आप इस रिकॉर्डिंग को सुन के बेशक समझ लें। अगर आपने लाइव नहीं भी सुना, आगे आपके सर में दर्द हो रहा था, अगर यू नो जैसे आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, किसी बच्चे ने आई थिंक शहीद ने कहा था, तो अगर हो रहा है तो दैट्स ओके, टेक अ रेस्ट, चाय पिए और उसके बाद सुनकर आप जरूर समझें कि उस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, सो दैट आप पीछे ना रह जाएं। ठीक है, शहीद आपने नहीं बोला? अच्छा, फिर बेटे कोई और होगा, माय बैड माय बैड। कोई और था वो। शक तो खैर आप ही पे जा रहा है मुझे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब, है ना। चलें, आपकी अटेंडेंस भी मैंने दोबारा ले ली है, मैंने डाउनलोड कर ली है वो डॉक्यूमेंट में। Yes, Moise, thank you for clarifying. Moise is right. That was Rafe. Let me note it down. Yeah, so मैंने ये दोबारा डाउनलोड कर लिया, तो ये डॉक्यूमेंट में आपके ना सीआर के साथ भी शेयर कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कितनी बार आपने लेफ्ट और ज्वाइन किया है। खुद देखते रहें कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैंने 2-3 दफा इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया है, सो आई हैव द रिकॉर्ड। तो आप इसको देख सकते हैं। कल भी आप में से मेजॉरिटी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी कि आप जहाँ कहीं गए थे किसी इंटरव्यू पे, राइट। और वो वाली एक्टिविटी भी रहती है कि आपने हमें आके बताना है कि उस एक्टिविटी में क्या हुआ और आपने क्या सीखा और आप हमें क्या बताने वाले हैं, किस चीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अपने वो जो सरमन्स हैं, अपने वो जो टॉक्स हैं, वो भी प्रिपेयर करके आए।
ठीक है बेटा, ANS कौन हो आप? हाउ डू आई गेस? पर्चियां डालूं कहीं पे जाके? ANS क्या होता है? इतनी बार कहा है बेटे कि अपना ओरिजिनल नाम। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमने ना ऐसी ईमेल बनानी है जिसमें हमारा ओरिजिनल नेम हो। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है। और आपको चाहिए था कि आप लोग अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ज्वाइन इन करते, जैसे कि 003 ने किया है, 13 33 52 इज देयर, वेरी गुड। एंड सम ऑफ यू आर सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने नाम के साथ अपने ना वो डिजिट्स ही लिखती हैं कि ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा वाला हसीब, हसन और हसनैन है। ये भी तो है ना, चार किस्म के हसनैन होंगे तो हाउ वुड आई नो विच हसनैन इज इट? राइट। तो आपको चाहिए कि डिस्टिंक्शन के लिए अपना जो ये जो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर या जो भी आप इसको इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं वो साथ हो। तैयब, ठीक है तैयब। ठीक है लियाकत बेटे, थोड़ा सा और इस पर टाइम स्पेंड करके देखें कि ये किस तरह से चेंज होगा और मुझे AS ना शो हो, मुझे आपका नाम शो हो। ठीक है चले, मैं वो डॉक्यूमेंट अभी भेजती हूँ आपके CR को, आप बेशक देख लीजिए। ठीक है, बाकी अगर किसी का नाम उसमें नहीं है और वो था फिर भी, तो वो भी अपने CR को बता दे, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। बल्कि आप लोग अभी कनेक्टेड है, मैं अटेंडेंस ही ले लेती हूँ। प्लीज स्टे कनेक्टेड। यस, दैट्स अ गुड आइडिया, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। आप साथ साथ बताते जा सकते हैं कि यू आर प्रेजेंट। ठीक है, एक मिनट मैं वो ओपन कर लूँ। को मैं ले लेती हूँ, एक सेकंड बेटा। ये है जी इंग्लिश, ठीक है। और ऐसा कोई बच्चा है जिसका नाम यहाँ मैंने रिमार्क्स में लिखना है? मुजम्मिल बेटे, आपका नाम आ गया कि नहीं? मोहम्मद मुजम्मिल नहीं आया। और वानिया का आ गया? नहीं। आप ही दो होते हैं मेरे ख्याल से, चले मैं लिख लेती हूँ। ओके, अब्दुल राफे। अच्छा, ऐसे करते हैं कि मैं आप सबको तो अलाउ नहीं कर सकती माइक, बिकॉज मुझे पता है कि फिर हम क्या करते हैं। तो मैं ना सुलेमान का माइक एनेबल कर देती हूँ। सुलेमान, आप बेटे चेक करके कंफर्म करते जाएं कि वो इसमें ही बैठे हुए हैं अभी के नहीं। ठीक है, एक सेकंड में सुलेमान को ढूंढूंगा। सुलेमान इज नॉट हियर। मोहम्मद सुलेमान है। अच्छा, PC। चलिए फिर आप चैट में ही लिखिए, मुझे नहीं शो हो रहे आप। ठीक है, अब्दुल राफे, आपने सिर्फ यस लिखना है। ठीक है राफे, अगर आप हैं बेटे मीटिंग में, राफे था मैंने देखा है कहीं पे। अब्दुल रहीम, रहीम भी है। अब्दुल एजाज, अब्दुल्ला एजाज। 003 भी है। अब्दुल्ला जिया, अब्दुल्ला जिया आई थिंक नहीं है। अब्दुल मनान होते ही नहीं, आई हैव नेवर सीन हिम। अब्दुल मनान है बेटे? नहीं है। ओके, अलिशबा अल्ताफ,
यस, ठीक है। अरीहा इमरान। Then we have Ashad Junaid. अशद है 008। Oops. आयशा तारिफ है। मोहम्मद चौधरी मोहम्मद उमर शहजाद भी है, मुझे पता था, मैंने नोट किया है। फाहद है। फहद फहद है, ठीक है। फरहान कैसर है। फरहान भी है। गुले लाला है। 013 is present, good. हंजला वहाब है जी। हसनैन अहमद जी, ओके। इफ्रा वहीद। इफ्रा भी है। इरसा इसरार प्रेजेंट, ठीक है। लाइबा रुखसार। लाइबा है, आई थिंक नहीं है। मलिक हमजा सईद। यस, ओके। मशल रियाज। मिकदाद हसन अब्बास। मिकदाद है। मुइज़्ज़ुर रहमान। मुइज़ है, मुइज़ जी है, ठीक है। मोहम्मद अली। मोहम्मद हमाद जी, ओके। मोहम्मद हसन नियाजी। देन मोहम्मद हुजैफा। कौन से होल्ड पे शहरयार? आई डोंट अंडरस्टैंड। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भी है। मोहम्मद नबील। मोहम्मद शराज। मोहम्मद शुएब। मोहम्मद ताहा। 33, गुड। मोहम्मद तैयब जफीर। मोहम्मद उबैदुर रहमान। ठीक है। मोहम्मद उमर, ठीक है बेटे, मैं चेक कर लूंगी शहरयार, आई चेक। मोहम्मद उमर है बेटे। उस्मान मलिक। मोहम्मद उस्मान मलिक। मोहम्मद जिशान यूनिस। मैम हसन न्याजी, आई एम प्रेजेंट। मैं तो हसन न्याजी नहीं हूँ। अच्छा, ये लो, कर दिया प्रेजेंट हसन न्याजी को, ठीक है। फिर हम चलते हैं, शहरयार इज प्रेजेंट, सालेहा भी प्रेजेंट है। ओके, मोहम्मद जिशान यूनिस है जी, जिशान भी है। अच्छा, जिशान इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने नाम के साथ 038 लिखा है। दिस इज वेरी गुड कि उन्हें पता है कि ये उनकी आइडेंटिटी है। शाजिल है। शाजिल नहीं है। शर्मीन अदील। शर्मीन भी है।
सुलेमान भी हैं, मोहम्मद शहीर भी हैं, वलीद हैं, वलीद अशफाक। जी वलीद, आर यू देयर बेटे? Yeah, नहीं जी है। वलीद भी हो गए। जुहेब हैं, जुहेब खान। जुहेब हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अब्दुल जब्बार। अब्दुल जब्बार हैं, नहीं ये नाम मैंने शायद नहीं देखा। अब्दुल्ला लियाकत सती, यस AS है। मोहम्मद अहमद इस्लाम। अहमद हैं, ठीक है। मोहम्मद हफीज मंजूर, हफीज भी हैं। मोहम्मद हैदर तैमूर, हैदर भी हैं। मोहम्मद महद फैसल, 52 भी हैं। मोहम्मद हसीब अहमद खान, हसीब भी हैं। और मोहम्मद रेहान। रेहान नहीं है। चलिए ये आपकी होगी अटेंडेंस। ऐसे ठीक है, आपकी बेटे अटेंडेंस भी हो गई है। और जो लोग मेरे पास एब्सेंट है मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ। देयर इज अब्दुल्ला ज़िया, अब्दुल मनान, अशद जुनेद, लाइबा रुखसार, मिकदाद, मोहम्मद नबील, मोहम्मद उमर, शाजुल नदीम, अब्दुल जब्बार। ठीक है। All right. I hope you did understand most of the point that we wanted to discuss. और ऑन कैंपस बेटे वो चैप्टर लेकर आना है, कंप्लीट करने की कोशिश भी करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, यू आर फ्री टू लीव।